रूबरू में आप लोगों का फिर से और एक बार स्वागत है। शास्त्रिका यूनिट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो एक लंबी जर्नी चली रूबरू में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण और अहम हो गया हम लोगों के लिए, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने जा रही है अदिति मंगलदास दीदी। तो एक हर एक इंसान का अपना अपना एक जी, मैं अदिति दी को पहले ज्वाइन कर जाता हूँ। यस, दैट विल बी बेटर। फिर उसके बाद मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया। सो एक ख्वाहिश होती है। रूबरू में Hello. दीदी आपका बहुत बहुत Namaste. स्वागत है। Hello. नमस्कार। Thank you so much, Kaushik ji, for having me on the chat. Thank you. दीदी क्या होता है, हर एक इंसान का जीवन में एक सपना होता है। एज अ डांसर हमेशा मेरा सपना रहा है कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ूं, उन लोगों के साथ बात करूं, उन लोगों की जर्नी सुनूं जिससे मैं इंस्पायर हो पाऊं और मेरी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो जर्नी है वो आगे बढ़ पाए। तो ये मेरे लिए, मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूं कि मेरे यहाँ पर काफी सारे स्टॉलवर्ड्स आप जैसे लोग आए, जुड़े और मुझे एक दिशा मिला। सो इट इज ग्रेट। आई एम सो ऑनर्ड दीदी। जी। Thank you, Kaushik ji, for inviting me, and it's a pleasure to be on your platform. But Stalwarts is a very big name, so I definitely don't fall into that category. But we are all devotees, or if I may say, um, you know, immersed in arts, either it is dance or music or painting. And in that way, we all, I think, every artist has something special. Every human being has. But in the field of arts, a kind of immersion is important. So thank you for having me. Thanks. आई डोंट नो, मेरे लिए दीदी स्टॉलवर्ड्स इज डिफरेंट वर्ड्स, बिकॉज मेरे लिए वो स्टॉलवर्ड्स है जिन्होंने एक मकाम कायम किया जिससे हम इंस्पायर्ड होते हैं। और जो कि हाँ, एज एन आर्टिस्ट मैंने इसलिए आर्ट को सामने रख के वो स्टॉलवर्ड्स शब्द का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है हर एक इंसान अपने आप में एक आर्टिस्ट है, हर एक इंसान, क्योंकि जीवन कला के बिना अधूरा है। Yes. कला पूरा जीवन ही हमारा कला है। तो और अगर मैं बात करूं कि हमारे जो मदर मम्मी हैं घर की, वो सबसे बड़े कलाकार है। वो पूरे परिवार को संजो के रखती है अपने कला के थ्रू। वो जो हाँ एक जी. कला होती है वो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक माँ के पास जो कला होती है, जो अपने संतान को, अपने पूरे परिवार को संजो के रखते हैं, ही शी इज ऑल्सो अ स्टॉलवर्ड्स। ये मेरी जो Yes, थॉट है, I understand. Yeah. थॉट को आपसे शेयर किया। दीदी मेरा पहला जो एक क्वेश्चन है, एक नृत्यांगना के रूप में आपकी यात्रा कब और कैसे शुरू हुआ, और ये जो लंबी यात्रा आपने तय किया है, आपका क्या अनुभव रहा? As you said very rightly, it's a lambi yatra. So it's difficult to explain in a few words. But I started dancing at a very young age. I don't belong to a family of dancers. I belong to a family of people from the world of business and industrialists, and to family of academicians. There were lots Okay. of mathematicians in my family. And but at a very young age, my parents saw that there was some artistic spark in me. And I think I'm really lucky that they believed in a liberal environment where the girl child was given as much. There was no differentiation between a girl child and their son. Both of us had equal opportunities in whatever they could explore for us. And Okay. so it was very interesting because from a young
childhood only, they encouraged us to be open to the world, Okay. be open to different forms of dance, to different forms of languages, to different forms of uh, painting and sculpture. I mean, I used to be taken to museums, and we used to travel and go to old, if we went to either a temple or a church, or a mosque, it was always to see the beauty of the architecture, the Okay. beauty of how art had transformed stone, Okay. right? They did not tell us that this is this religion, this is this religion. They let us grow freely but with responsibility. And so that journey, along with my journey with my two gurus, Srimati Kumudini Lakhia and Pandit Birju Maharaj Ji, has been a very interesting journey, because at every um, point, there is a place where you ask yourself, where am where do I find my little path? You know, and all these people, my family, Kumiben, Maharaji, um, and then my family grew. So, gave me the courage to be free to explore. I think that's very important. To fail sometimes, it's okay. I think we have to be ready to fail. We have to be ready to that's when you have the courage to dance your own dance. So in short, this would be the journey of learning, failing, trying new things, but with complete immersion. There are no shortcuts. तो ये नहीं है कि अच्छा ये भी करेंगे, ये भी देखेंगे, इसको भी थोड़ा छू ले, इसको भी थोड़ा समझ ले, इससे भी थोड़ा ज्ञान ले. No. Be open to life. Kumiman used to always tell us, don't wear blinkers. Be open to life. Have a vision that is, if possible, entirely, But the grounding in Kathak is most important. Your roots have to be really strong. And yet you cannot be arrogant about that strength. Okay. So I hope that answers your question. yeah, I got I got lots of points from your journey. So we will talk about. आपने भारत तथा विश्व में कला को विकसित किया है, और सबसे बड़ी बात है यूके, यूएस एंड सोवियत यूनियन में इंडिया को आपने पहले रिप्रेजेंट किया. तो ये गर्व की बात होती है हमारे इंडियन आर्टिस्ट के लिए, और इंडिया के लिए भी, जब हमारे इंडियन आर्टिस्ट बाहर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें आपको चुना गया कि आप बाहर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है. सो उस समय आपकी जो मनोदशा या अनुभव थी, वो उसका क्या मतलब आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे? See, I love to connect with people. And I'm Kathakar. I'm someone who narrates stories, right? My stories happen to be from a milieu that I was born and brought up in. But you have to understand that we are all human beings. So I'm first a human being, then a woman, and then the classification becomes an Indian, and then a Kathak dancer and stuff like that. So when I went abroad, I was very, and I still feel very happy when I travel, not only abroad, when we are in anywhere in India itself. The main thing for me is whether you are Indian or you come from Africa or Australia or anywhere in the world, it's to connect. Because
for me, I love human to human connection, right? So that is of primary importance to me. And then there is a methodology that I have learned all these years, I have explored, which is a methodology whose history and geography is immersed in this land that we call India, right? And I would like to share those universal thoughts and universal through that methodology that has been part of my growing process. So whether I go to Russia or whether I go to Chennai, my thing is I want to reach out and touch you through my art, which is Kathak, and let it resonate with you, hopefully, over geography, over time and space. वाओ, मैंने कहा ना कि मैं रूबरू जब मैंने शुरू किया था तो मेरा ये था कि मैं कुछ सीखूं और एवरी डे आई लर्न. सो आपके नृत्य में मुझे एक चीज देखने को मिलती है, दैट इज अ कोरियोग्राफी इज अ मेजर पार्ट. और तो जहां एक अलग लैंग्वेज, कोरियोग्राफी की भी एक अलग लैंग्वेज मुझे दिखने को मिलती है, हालांकि जो आपको सबसे अलग कर देती है. मतलब अगर मैं किसी और का भी नृत्य शैली देख रहा हूँ या कथक में ही मैं देख रहा हूँ और तो मैं आपको जब मतलब मार्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में क्या अंतर होता है, तो मैंने एक अलग लैंग्वेज वहां देखा कोरियोग्राफी का. जैसा अगर हम लावान का देखते हैं, लावान से कुछ कोरियोग्राफी यहाँ पर इंडिया में डेवलप्ड हुई है, चाहे क्लासिकल फॉर्म्स में भी उसका प्रयोग रहा है, ये तो अस्वीकार को ही नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी रिच कोरियोग्राफिकल एक पॉइंट है. तो आपके अगर मैं देख जियोग्राफी को अलग अलग डायमेंशंस देते हैं. कैन यू हियर मी? Yes, Didi, can you hear me? You got stuck. Yeah, you got stuck for a while, but I can hear you now. Okay. So, वो अलग दिखता है, आपके काम कुछ अलग दिखते हैं, आपके कोरियोग्राफी कुछ अलग दिखता है, जो आपको सबसे अलग कर देता है. और माइलस्टोन, मतलब हर एक फेज में आप कुछ ऐसा कर जाती है विच इज वाव. सो ये अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं. Well, first of all, thank you. You are very kind and very generous with your praise. So thank you very much. You know, I've been lucky really to have gurus such as Maharaj Ji and Kumi Ben. Kumi Ben, आप जो choreography की बात कर रहे हैं, choreography exists in the way we are talking right now. Choreography exists in the way when I look out of, if I open this, there is a little area that is free and then more apartments, and at distance I can see the ocean. If I look up, I can see the sky and I can see a bird flying through the sky. So I haven't learned choreography from anybody, but what I observed with Kumi Ben and Maharaj Ji, Kumi Ben for me was about this little body in a horizontal extension to the rest of the world. And Maharaj Ji to me was this body and this little bit, the center of my body to the rest of my body. These two together, I feel, has really helped me. Plus the fact that to me, life was the biggest teacher. And therefore, if you look out of the window, either I can look down and I look at the children playing in the playground, or I can jhako and look at somebody's window and maybe husband and wife are having a conversation. Maybe I look little higher and somebody is watching television.
Maybe I look distant and I see the ocean. Maybe I look up and I see this amazing sky changing color, clouds forming, birds flying. That is choreography. So I feel that you have to, I have not learned any choreography, but you have to be open to these inputs. You know, कि मुझे क्या कहना है. मुझे अगर कहना है कि there is a bird flying, then if I keep my vision open like this, then that bird flying will be somewhere here. But if I slowly bring I show a tree that is swaying, on which there is a bird, suddenly one bird takes off. And then your own imagination goes up to the bird flying, right? So you use this in dance. I try to have, I've been criticized for stuff which is good, because it's a learning process. When people criticize you, you have to listen to it and you have to learn and you have to find your own truth in it. But I feel that आप चक्कर ले लीजिए, ठीक है, चक्कर का टुकड़ा ले लीजिए. तो बहुत लोग चक्कर का टुकड़ा करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, एंड भयंकर स्पीड होती है और एकदम रियाज से करते हैं. मुझे क्या लगता है कि उस जगह पे जब आपने ऑलरेडी माइक पे बोल दिया है कि अब देखिए एक चक्कर का टुकड़ा, ठीक है, जिसमें मैं 50 चक्कर लूंगा या लूंगी, फिर आप वो चक्कर का टुकड़ा करते हैं, इतना you dance it beautifully. What happens that it is your technique that reaches out. It is your prowess of dance that reaches out and everybody says, वाह वाह क्या बात है, ठीक है. और ये याद रहता है कि वाह उन्होंने क्या चक्कर लिए थे, right? But yeah. If those, and I say this very often, if those same chakkars, if you build it into a story, because you are a kathakar, सिर्फ अभिनय से कहानी नहीं होती है, आप हर एक चीज से कहानी कहोगे, आप अपने डांस से कहानी कहोगे, आप अपने जो आप बंदिशें चूज करते हो कि टुकड़ा चूज किया क्या, पर मिलू की तिहाई कौन सी, उससे कहानी बताओगे, आप लाइट जो यूज करेंगे उससे कहानी कहोगे, आप स्टेज के आगे हो या पीछे हो, राइट हो कि लेफ्ट हो, उससे एक कहानी कहोगे. तो अगर आप, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है सिर्फ, दैट यू यूज चक्कर्स इन सच अ वे दैट यू आर नरेटिंग अ स्टोरी, you are narrating a story of storming, that it was you are talking about a stormy night, right? You don't have to say, oh, now there was a stormy night, but you build it into your work that jo dekhta hai, they think, wow, this is a storm. For Aditi, it was a stormy night, but for the viewer, it can be, oh my God, this storm reminds me of that day when I lost something. There was a storm in my heart. So then you will remember कि चक्कर अच्छे थे या बुरे थे, but you will also remember this emotional input. And that emotional input will last, the resonance of that vava or that ullas, is it the word, or that joy will last over space and time. It won't be कि क्या चक्कर करती है. फुटवर्क भी आप इतना सारा आप काट छांट करते हो. Do it where it has another dimension of a narrative, without saying a narrative. I don't mean saying a narrative. Build it into your work. I don't know.
I just feel like that. या दैट इज वेरी ट्रू। मैं आने वाला था इस विषय में, जब आपको मैं पढ़ रहा था तो वहां पर ये बात बहुत बार बार आया है कि आप नृत्य से बात करते हैं, मतलब आपकी थॉट ही है वो नृत्य से बात करना, बिकॉज इट्स अ वेरी साइलेंट वर्ड। डांस इज वेरी साइलेंट बट कम्युनिकेटिव, बट उसको उसमें जान तब आते हैं जब वो कुछ ना कह कर भी बहुत कुछ कह जाता है। और इस समय मैं एक चीज कहना चाहूंगा, काला घोड़ा फेस्टिवल में मैं आई गॉट अ गुज़बम्प्स। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ और आई वाज मतलब वो जो माइलस्टोन, वो घुंघरू से जो आपने एक आवाज क्रिएट की थी, एक साउंड क्रिएट किया था जो पूरे समा को पूरा बांध दिया, और नॉट ओनली दैट, इट्स टेल अ स्टोरी, इट इज मिसमराइजिंग। मतलब वो क्षण मेरे लिए बहुत मिसमराइजिंग था, एंड आई लव्ड दैट वर्क। सो जब भी अभी मुझे गुज़बम्प्स हो रही है, वो जो एक मतलब वो धुन अभी तक मेरे कानों में बजती है। आदित्य जी, इट इज ऑनर, मुझे वो माहौल मिला, वो आपको वो सुनने का, उसको देखने का। मैं उस समय आपके घुंघरू की आवाज नहीं, मुझे पता नहीं, आई एम ऑल्सो अ कथक डांसर, लेकिन उस क्षण में मैं कुछ नहीं देख रहा था, सिर्फ आपके, मेरी नजर आपके पैर में थी, और वो जो साउंड क्रिएट हुआ था, जो वेरिएशन, जो वेव चल रही थी, साउंड में जो वेव चल रही थी, मैं उसको महसूस कर रहा था। इट वॉज अमेजिंग फॉर मी। आई डोंट नो मतलब किस तरीके से लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं, बट वो मेरे लिए yes. Yeah, I sorry to interrupt. Sorry, please. Sorry. No, so I said thank you. Yeah, that I find that you have to. ये चीज मैंने बहुत बहुत लोगों से सीखी है कि आप जो नाचते हो, जो आप कन्वे करना, उस इंटेंशन आप ऑल द टाइम पूछते रहिए अपने आप को yes, कि yes, आपका yes. इंटेंशन क्या है। अगर आपका इंटेंशन है कि 200 घुंघरू से 100 घुंघरू से एक घुंघरू की आवाज देना, तो वो इंटेंशन कम्युनिकेट होगी। अगर वही चीज करके आपका इंटेंशन अंदर से ये हो कि नहीं, मैं इस एक घुंघरू को अपनी सांस से बांध देती हूँ, क्योंकि दैट इज माई लाइफ लाइन, दैट इफ दिस वन सांस स्टॉप्स, दैट्स इट, okay, then that intention will communicate in a more maybe profound way to you. And I think that's where sometimes young dancers have to think that just learning a tukda or a parmilu or and of course, look, there are no shortcuts in your riyaz. So वो तो सीखना ही है, बट वो सीख के अगर आप स्टेज पे जाओगे तो मेरे हिसाब से आप अधूरे जा रहे हो स्टेज पे जी। एक आप सिर्फ फिजिकलिटी से जा रहे हो स्टेज से, बट you are not going with your intellect and your emotional content. Therefore, you are not going as an entire human being, as an entire one person with everything in you. You are going with your, that's where I think sometimes sometimes the dance doesn't appear whole, I mean sampurna, because you go with either physicality or emotional or intellectual, but you are a whole person. I can't just dance with my hand, I can't just dance with my feet, I'm dancing with my whole body. Like our gurus have taught you, that footwork doesn't mean it ends at your ankle. Footwork means it's completely physically up till here. How Yes. you pull your energy from the ground.
you know, how you relate to the nagma. So nagma and जो music आ रहा है, you relate when you're doing footwork or a TI. You are relating this way, you know, you are relating to the space. Then with the energy and the sound, you are pulling that energy from the body. So you are relating it like this. The relationship is not just with your feet, it's with your everything. That's where I feel that you need that kind of sadhana and immersion when you are rehearsing. And sometimes you fail, it's okay. इसलिए शायद आप एक चीज पे फोकस करती आई है, बॉडी, माइंड, स्पिरिचुअलिटी, जो तीनों मिलके एक पूर्ण कलाकार को बनाते हैं। शायद यही आपकी फिलॉसफी है, जहां तक मैं आपको पढ़ पाया या आपसे जो सुन पाया मैं। सो Texture, if I can say textures, है ना? या We are human beings, and we are such textured human beings. लोग कहते हैं ना कि after being with somebody even for years, you don't know that person totally, because there are layers within layers of a human being. yes, So yes, definitely. if your storytelling has textures, then it's a more profound way of storytelling. Like, I mean, poetry is after all made of just words. आप एक एक शब्द अगर अलग से पढ़ोगे तो it has a different context. But when a poet weaves that story together with those 4 or 5 words, which you know forever, you know, and suddenly a door opens and you say, wow, this is another narrative, it's another experience, it's another texture that I never saw. जी जी, अदिति जी, हमारे जो दर्शक हैं सबने हेलो बोला, लेकिन मैं आपके बातों में इतना खो गया, मैं सबको बोल भी नहीं पाया हेलो हाय। अनुश्री बैनर्जी है, वो मुंबई से है, अनुश्री बैनर्जी। हेलो अनुश्री दी। और AK आर्ट्स इंडिया से अनिल कुमार सिंह हैं, और काफी सारे आयुष्मान है, पीयूष राज है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको यस दीदी आप हाय कुछ भी बोल दो। और मेरे शास्त्रिका की तरफ से भी हेलो, थैंक यू। आप हमारे दीदी को सुन रहे हैं, मैं खो जा रहा हूँ। सो I didn't hi, I'm sorry, I couldn't, you know, I need specs to read, and okay. I can't read, but thank you so much. अच्छा, बैनर्जी अनुश्री जी ने कहा, अनुश्री दीदी ने कहा माय रिगार्ड्स टू अदिति दी, प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी, वो सबको आपको प्रणाम करें। शुभम तिवारी कथक, प्रणाम मैम, चरण स्पर्श आपको, वेरी गुड दीदी। Pranam, no Charan Sparsh, but please, yeah, hi Piyush, I can see, yeah, hello, somebody I know. या विभावरी है जर्मनी से, और वो आपकी बहुत आपके काम को देखती है। शी इज कथक डांसर, एंड वो आज ही मुझसे जुड़ी है, मुझे व्हाट्सएप किया कि मैं दीदी का वो देखने आ रहा हूँ, तो आप मुझे प्लीज फॉलो बैक कीजिए, नहीं तो मैं नहीं देख पाऊंगा। सो where in Germany does she come from? She's come from actually she is from Mumbai, but now she is in Germany for her study. So where in Germany? मैं एक बार विभावरी, आप थोड़ा सा नहीं, हाँ आप थोड़ा सा बोल दीजिए, जर्मनी में आप कहाँ रहती है विभावरी? Hi Piyush. She is Bengali lady. Yeah, she is Bengali lady. So anyways, we continue. Yeah, I just asked about Germany because my husband is German, so I go often to Germany.
So that's why I just asked her where she was. Yeah. नहीं, Okay, वो let's. विभावरी जरूर बोलेंगी, विभावरी जरूर बोलेंगी। धनपति बोल के एक लड़का है कैलकाटा से, उन्होंने हेलो कहा। हेलो धनपति, प्लीज स्टे विद अस। अच्छा, Hello. आपके प्रोडक्शन एंड ट्रीटमेंट जो आपको अलग करती है, मैं कुछ प्रोडक्शंस के बारे में आपसे बात करूंगा, जैसे चीक, स्वागत, विस्तार, द साउंड ऑफ यूनिवर्स, विंदाकृति। इन ये जो परफॉर्मेंसेस हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट इस परफॉर्मेंस में दिखते हैं। तो इसका अगर आप कुछ चर्चा करें। Yeah, you know, these Cheek, Vrindakriti, Shadows of the Mind, they are very old pieces. तो अभी आप जब बोले तो मुझे याद आया, मैं तो हाँ, these were really old, and Shadows of the Mind, फिर आप 2-3 और भी बोले हैं अभी. So these are very old works. The newer works are much different, but the process of old or new, I may not be able to say. I mean, I of course I know a work, but the process is, I always say that I get pregnant with my work, you know, and that work grows within me like a child. And it takes sometimes 6 months, sometimes 1 year, sometimes some things remain in your mind and your body for years. Like कुछ बंदिशें थी, बहुत टाइम से सुना था, बट पता नहीं चला कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे करें। कुछ चीजें होती हैं जो अभी आई और एक उसी इंस्टेंट पे कुछ प्रकट हो गया, you know. So you have to be open to that creative instinct. You can't say कि now I'm going to sit here, अब देखते हैं कौन सी सोच आती है। वो सोच कहीं भी आ सकती है। मेरे पास, मैं ना हर एक प्रोडक्शन, आपने ये जब जितना बोला, I say more, I say immersed, widening circle, seeking the beloved, footprints on water, interrupted. Footprints on water, yes. Yeah, these are all. Footprints on water is also an old work. All these pieces. See, what happens is that I have a little bag, and anywhere I am, any thought comes to my head. I have little messages which I've written on newspapers, which I've written on airline boarding passes, napkins, tissue papers, and I collect that. Right? It's responses, sometimes thoughts, processes happen from anywhere. I remember Gauri Divakar, she's a wonderful Kathak dancer. I was making a piece for her, Dancing Emptiness. And we had chosen a few works of Kabir. Somehow I was not being able to see how I was going to enter these great dohas and you know, great work of Kabir. And one day I was doing something and suddenly I said, oh my God, this is the entry. But that instant will not come if you don't do riyaz every day, if you are not open to life every day, if you are not exposing yourself. Go to a museum, see art, see sculpture, read books, read poetry, travel. If you can't travel, read about other cultures, watch movies, listen to, watch dance. It can be any dance. It can be our classical dance, it can be Western dance, it can be Bollywood dance, whatever it is. Something, some instant will trigger. आप देखिए महाराज जी के साथ आप 5 मिनट बैठोगे
तो you will realize that there is something happening in him constantly, because he is so observant about life, and at the same time he's so immersed in his dance. आप रास्ते पे जाएंगे, यहाँ कोई घोड़ा चल रहा है तो वो उसके ऊपर कुछ बना देंगे, कुछ बारिश आ गई तो उस पे कुछ बना देंगे. Why? Because on one side his life has been about complete immersion in dance, and as a human being, as an artist, he's completely observant. He observes just unbelievable things. I mean, when he was teaching, he was observing things about me that I didn't know about myself. So, and you know, observation is also, I'm starting some workshops next month. And I'm very happy that I'm doing that with a wonderful contemporary dancer, Akash Odedra. And the workshops are about participation and observation, because you learn a lot by observation. मैं वही है ना कि मैं जब भी सुनता हूँ तो मेरे अंदर भी वो आपकी बातों में काफी सारे स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, ये सारी चीजें बातें आई. आप म्यूजियम विजिट करती थी, तो रिसेंटली मैंने आपका एक काम देखा, मैं वर्चुअल डिजिटल मीडियम से ही देखा, जहां पर आप आ रही है तो पीछे चारों शैडो वॉल पे दिख रही है. राइट, इट्स लाइक अ पेंटिंग. नृत्य और पेंटिंग का जो मिलन, एमलगैमेशन बोलना बहुत मुश्किल, मतलब एमलगैमेट मतलब मैं इसके साथ उसको चढ़ा दिया, इट्स नॉट. मतलब इट्स लाइक अ पेंटिंग. जब आप काम कर रही है तो कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा दीदी, मैं नहीं जानता लोग किस तरीके से इसको देखेंगे. अगर मैं आपके फुल एक प्रोडक्शन देख रहा हूँ, राइट, और मैंने कहीं पर भी उसको स्टॉप कर दिया, तो वहां पर मुझे जो चित्र दिखती है, इट इज टेलिंग अ स्टोरी. राइट, तो ये जो माध्यम है, एक ये जो पेंटिंग, एक स्टोरी टेलिंग, हर क्षण, मतलब मैं कहीं पर भी आंखें बंद करके मैंने उसको पॉज कर दिया, एंड देन मैंने आंखें खोला, और ये मैंने सत्यजीत रॉय की फिल्म जब देखता हूँ तब मैंने इसको ट्रिगर किया था. मतलब इस तरीके से मैं इसको देखता हूँ. कोई भी प्रोडक्शन, चाहे वो नृत्य हो, अगर मैं अकरम खान के काम देखता हूँ तो मैं कहीं पर भी उसको पॉज करता हूँ तो मुझे एक छवि दिखती है, तो जो कि वो आपके काम में मुझे दिखा. सो पेंटिंग और नृत्य का ये जो समागम है, ये किस तरीके से आपके काम में दिखाई पड़ता है, और इसका क्या रिलेशन आपने आपके नजरिए से आपने देखा? See, one thing I don't remember, there was a great ancient philosopher. I'm terrible with names these days. याद ही नहीं रहता है. I've forgotten. Who said, and I heard this from the great Dr. B.N. Goswami, who is one of the most, I mean, like he's a stalwart beyond stalwarts on miniature paintings. And he said, he was quoting this philosopher, and he said that no one great art can not be translated into another great art, right? So Okay. when you take a beautiful poetry by a great poet, or you are talking about anything, a painting, a poetry, a prose, you can't translate that into dance. You have to transform that into dance. Yes. And I think that is the most important thing, that you have to see that poetry, sculpture, architecture, painting, anything can't be just translated. You know, कि अच्छा ये शब्द है
तो इसका इक्विवेलेंट डांस में क्या है, तो मैं वो करूंगी। ठीक है, ये पेंटिंग में ऐसा कुछ किया है जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है। ओम का, आई एम सॉरी टू पीपल हु आर डूइंग दिस, बट दिस इज माय एक्सपीरियंस and they are right in their place, but this is how I feel. You see the symbol of Om. Okay, now there is a reason for why that symbol. It is a representation of a profound nad, sound, whatever it is. When you translate that symbol into movement and do this, it's lost. You have to go into the depth of what that Om represents in terms of the symbolic representation, in terms of the sound representation, in terms of the spiritual representation, in terms of its entire representation, so that finally if one dances Om, the audience doesn't only see Om, they see beyond Om. They make their own connections with that Om. That is very important. क्योंकि आपकी लाइफ और मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस सिमिलर नहीं है। मैं आपकी लाइफ में कुछ ठूंसना नहीं चाह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप मेरे साथ चलिए कुछ देर तक, फिर आप अपनी जर्नी पे जाइए, वो ही मेरा एक्सपीरियंस लेके आप अपना एक्सपीरियंस बना दीजिए। तो ये जब आप ये जब ट्रांसफॉर्म करोगे, then it is possible that you will find something more profound. There is something else also I feel is the simultaneity of art, which means that the music and the dance they don't follow each other, but there are a simultaneous exploration. So very often when I have done these new works, जैसे शुभा मुदगल जी, उनके साथ it used to start with just conversing like you and me are chatting right now, just talking about what is this, what does immersed mean, what is the philosophy of Krishna to me, you know, to a person who doesn't consider herself a Hindu, Muslim or a Christian or any organized religion. How do I enter the world of Krishna? How does she understand that? How does she enter the world of Krishna? How do we then come together? Right? And then how do we create something which is the world of Krishna, but with our truth in it? मतलब मुझे यहाँ से एक चीजें मिली। मैं जैसा मैं कहता हूँ, मतलब मेरी जो एक फिलॉसफी है, मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि एक शब्द रविंद्रनाथ टैगोर की गाने पे बहुत सारे लोग डांस करते हैं। जैसे अनुश्री जी के साथ भी मेरी इसी बात पे बात हो रही थी कि एक शब्द के अंदर एक अंतर्निहित बातें होती है, एक भाव होती है। वो शब्द तो सबको ही ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन उस भाव को आप अपने जीवन से कैसे दर्शा रहे हो। आई थिंक आप यही कहना चाह रही थी कि को आप जैसे ओम, सॉरी, आप जैसे कह रही थी जैसे ओम को जिस तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट किया, वो तो किया, वो अलग तरीके से किया, लेकिन ओम की जो भावनाएं हैं, उसकी जो विशालता है, उसके अंदर की जो डेप्थ है, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो? दैट इज एक्चुअल इंटरप्रिटेशन या transformation. How does that relate to your truth? Yes. You know, I remember I was doing something for Max Muller Bhavan once. Yeah. And Dr. Lechner at that time was the director of the Max Muller Bhavan.
So we were chatting, and this is related to your previous question also. And he said, Aditi, when you show lament by doing this, both your hands up and you're lamenting, and that becomes your motive, how have you lamented with your dance? Because if you put on the TV, and he, at that time there was some conflicts going on in the world, and he says, have you seen when regular people were lamenting, they were doing this, right? Yeah. How will you break that barrier and go into a lament that is beyond that gesture? So use the universal gesture, but how will then it become so personal, and yet it will reach out to people? How will you explain lament by not moving at all? What will be the way your head is bent, or your shoulders, or your fingers? How do you build that? Also, that is very, sometimes we do a lot of literal things, and this is all Yeah. all sewn up. All our questions are, Yeah. it's like a tapestry, you know जी, एकदम मैं Sorry, I इस think we have taken enough time now. I think it's done, no? जस्ट टू और थ्री, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे. प्रेस्टिजियस अवार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें, आपको इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी अवार्ड और संयुक्ता पाणिग्राही अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, और आपने एसएनए अवार्ड को नहीं एक्सेप्ट किया है. ये आपके पर्सनल रीजंस होंगे, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट इज ओन चॉइस. लेकिन जो एक अवार्ड्स मिलते हैं, फिर उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. सो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने काम किया. सो क्या कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका इसमें रहा है कला में? I think awards are like an appreciation of one's work, and you have to take them with grace, and when you accept them with magnanimity and with grace, and when you don't believe in the fundamental reason why the award was given, then you may reject it. So the responsibility is not because you have rejected the award. In fact, I am more responsible because I rejected to one National Sangeet Natak Academy Award and one by the State Sangeet Natak Academy Award. My responsibility is more because I did not take the awards, because I had a reason from my side, my understanding of not taking. And as you said, we don't need to go into that. I've gone into that many times and done many chats about that. So responsibility is like with an art. Would you like some? No. Take It's a okay. break. Yeah. Okay. No, So it's okay. responsibility comes as an artist, not because you have got an award, you haven't got an award. Responsibility is every time you are communicating with somebody, whether it is in some big fancy theater in one of the big metropolitan cities in India or abroad, or in a small little village that you have been called to perform, because you have your responsibility for holding this great art. And the responsibility is for as an artist, as a human being. So I don't think responsibility is something that should be because you've got an award.
I'm more responsible maybe because I've not taken the award. But I think there may be great artists who have not got any awards, right? But they are responsible about the art they carry within themselves, the art Yeah. that they want to reach out to the people with, the art that they are teaching to their students. So responsibility ke bina to um, it's very shallow, I think, and very flippant. You have to be responsible for every action of yours. दीदी, एक क्वेश्चन है। कथक इज अ वेरी पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रहा है, और जब भी किसी ने इसके फॉर्म को ब्रेक करने की कोशिश की या नई दिशा देने की कोशिश की तो वो चर्चे में आई। लेकिन जब आप किसी चीज को ब्रेक करके एक नए फॉर्म, एक उसमें एक खोज, क्योंकि आर्ट हमेशा खोज है, आप उस खोज में उस दिशा में चले जाते हो, डूबते जाते हो। अब दूसरों को पता नहीं चलता कि आप कौन सी चीजों को उसमें खोज रहे हो, राइट? तो उस समय लोगों की एक अलग तरीके से एक चर्चा होने लगती है। आपने भी एक दिशा कथक को दिया है, अगर मैं इस तरीके से कहूं कि आपके जो नृत्य में मैंने कथक से एक नई वोकाबुलरी आपने तैयार की, लाइक कंटेम्पररी वोकाबुलरी, जो कि कथक से आपने डेवलप किया है। सो अगर आपके रिसर्च वर्क के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि क्या होता है, लोग अलग तरीके से चीजों को वो जो प्रोसेस आपने, वो जो लंबी यात्रा, जो प्रोसेस, जो साधना आपने की है, शायद वो नहीं देख पा रहे हैं आपके काम को लेके, वो चीजें कमेंट पास करते, बिकॉज वही है ना कि हम जो देखते हैं उसी के ऊपर बात करते हैं, हम उसे उसके अंतर्निहित चीजों में नहीं जाते। सो अगर आप थोड़ा सा yeah, first of all, there are two questions I see in this which I would like to address. One is when you said paramparik hai, which is, of course, it has been coming down through centuries. So how far back in history do you go to say this is what is paramparik, right? It's a flow. yeah So, yeah and just see how contemporary the dancers must have been, because from the temples, this dance has gone into the courts, right? yeah The style per se remained the same, but the intention changed. And as we have discussed, intention is a very integral part of content, yes of how it is, what happens when your intention changes. It changed from the court, from the temple to the court. From the court, it went into sort of smaller kotas and principalities during the British time. Again, there was a transformation because the nazariya of who was watching, who were you communicating to, was slightly changed. Then, with independence, it was brought out on the proscenium stage. Today, it's in our, right, this is my bedroom, I'm dancing in my bedroom today. So it's come in here. So it's a flowing history. And to me, every artist, every Kathak dancer has added to the form. Okay? This is a controversial statement maybe, but for me, the form is not greater than an individual artist. The form would be non-existent without the millions of artists who have come and who have contributed in their own way. So, to me, the human brain, human parampara, if I may call it. Human parampara. Yes. Yeah. Human parampara is far greater than Kathak parampara. Yeah. A Kathak parampara is something that every individual artist has contributed to from the beginning. It's a flow. It's like a river that is flowing. And to me, what
was tried as an experimentation once upon a time, okay, has become part of parampara. I mean, you ask yourself, what was the point of doing footwork in a temple? What? It was narrating stories using simple gestures of mythological stories. Why did you need to have these very complicated rhythmic permutations? Obviously, that came into being because the intention changed from the court to the from the temple to the court. In the court, you needed something that was more dynamic, that was more complicated, that would please the person who was watching, that would start a different kind of narrative. Now that has become parampara, you know. So that those artists added, and those they must have tried, and those little trying creative inputs became part of parampara. So I am sorry, I am a paramparic Kathak dancer. Yeah. So that's how I see. दूसरा आपने जो कहा, दूसरा जो मीनिंग, दूसरा जो एवरी आर्ट, दूसरा जो आपने कहा कि I do, as I say, I plant a seed of Kathak. आपने प्रोसेस कहा ना, वो seed of Kathak में when I water my Kathak sensibility, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जो मैंने बहुत सारे कथक डांसर्स को देख के ऑब्जर्व करके सीखा है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है कथक, और जो मैंने उनको, जो उनकी धारण करने की शक्ति है वो देख के जो मैंने सीखा है, जो मैं वो जब मैं I water that seed with those Kathak influences and inspirations, a tree grows out. That is my Kathak tree. Okay? But suppose I want to narrate a story that beyond my understanding of Kathak, the wider understanding of Kathak, I can't narrate it in the best of my possibility. तो या तो मैं कहूंगी नहीं, मुझे करना ही नहीं है, या तो I have to find a vocabulary of my mind, of my heart, of my body that is going to be able to say that story to you. So then I plant that Kathak seed that I have got from my gurus, from observing great Kathak dancers, many young Kathak dancers, that all that Kathak seed I've planted. But then I water that with contemporary sensibilities, contemporary movement patterns, contemporary poetry, contemporary images. Then that tree that grows out is what I call contemporary, my contemporary dance based on Kathak. And I have never confused the two. If you see, if every time I'm doing a solo, Kathak solo, it will say Kathak solo. My group has a group, my group work choreography, which is Kathak, I say Kathak. And that is Paramparic Kathak. Because Parampara is a ever-changing, ever-evolving stream. It's not some fixed pond that was... and if it is a fixed pond, I want to know कि आप कौन सी हिस्ट्री में किस तारीख का कहेंगे कि ये था पारंपरिक पॉन्ड? It is true. You know, where will you go? So, and then when I do my contemporary work, I call it contemporary work based on Kathak. And I feel as a human being, I have a right because I love to dance. Yes, that is important. That is important. First, I love to dance, and then second, I love to dance Kathak. So when I narrate my story through Kathak, which is 80% of my work, that's it.
But if there is something which I want to tell you, which I can't, then I need to dance it in a different way, find different ways within this Kathak body. दीदी इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, मेरे और 2 क्वेश्चंस है रिलेटेड टू, तो ये 1 घंटा हो गया, ये अभी खत्म, मतलब ये Yeah, I चल think रहा है।